we are going to talk about a topic which is impact of war on human life or human lives. मतलब जो लड़ाई झगड़ा मारपीट जो होता रहता है, जो वॉर होता है, उसका लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ता है। कुछ क्लू दे रहा हूँ। आप लोग ये बोल सकते हो कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, उससे दिक्कत होती है। जो है आप लोग छोटे हो लेकिन आप लोग को ये पता है कि बहुत लोगों की नौकरियां चली जाती है, इसकी वजह से मार्केट में बिजनेस मतलब धंधा मंदा होने लग जाता है। लाइक वाइज यू कैन रिलेट एंड थिंक कि क्या क्या शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई वुड नॉट टेल एवरीथिंग, आई वांट यू गाइस टू थिंक, एंड आप लोग अपने सराउंडिंग में जो देखते हो, जो सुनते हो, जो जानते हो, उसके बारे में भी वो शेयर कर सकते हो। हाँ, क्रिस वीर कुछ बोलना चाह रहे थे? आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, चलिए तो फिर वीर से शुरू करते हैं। बाकी लोग सोचिए, सुनिए भी और सोचिए भी कि क्या बोलना है। Okay, sir. ओके। So while the war is holding on, many people lose their lives and also they lose their homes. Many people have because cannot afford food because when the war is happening, other side of the peoples of war destroyed the factories of food, which affect people. Why they do not have enough food to eat. They also lose their lives. And many people loses their homes and they have to shift their homes from away from their homes, many of them, and many army officers who are very far from the family, and they died, and many their families are very sad because many people's army peoples died on them. That's it. And sir, Good. many weapons That's a influence. good Sir, start. And see, sir, many places destroyed because of the bomb, because of the bomb meanings. Many homes also destroyed, sir. hmm, right, right. Now, so see again, uh, you covered a lot of points, Veer, and trust me, it's not easy to be the first person, no, to start talking, because no, when others will talk, they'll have some background. They will have something that they can rely on, or something they can reuse based on what they've heard so far. Like in um, good job by starting the discussion. Let's see if Chris also has something to share before we go to anybody else. Chris, you want to share something? Sure, what I have think my brother had said now. Okay, okay. So let's see. See, even you guys can think of. See, you talked about human life. You talked about people losing job and all. You talked about some of the army officials being away from the family and then dying, and everybody is sad. But nobody has talked about kids, the children, right? There are a lot of small children who don't know what is their future. They have lost their family. They don't know where their parents are, right? So likewise, there's a huge impact of war. I mean, and there's much more. I don't think I can cover it all. है ना? तो चलिए let's see what Satyam wants to share. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Sir, impact of war in human life, such as mental health, the division of people, and the displacement of people, and finally the changing of morals. Hmm. Be it resolved that war does impact humanity and can cause long-term problems such as PSTD, depression, and war. Uh, the short-term consequences of war are dreadful, Hmm. and the destruction of physical infrastructure, and the weakening of economic and political institution, and the obvious losses is human life. That Hmm. बहुत बढ़िया.
बहुत बढ़िया देखिए आप लोग मतलब यू आर एडिंग मोर कलर्स टू इट मोर कलर्स मतलब नॉट समथिंग टू नो टू फील हैप्पी अबाउट एटलीस्ट यू आर टचिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया बेटा सो नैतिक देखें आप सुनाइए भाई Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा So there are very bad impact of war in our life. हम्म For example, in war there are many loss of life of soldier and also civilians and सिविलियंस हम्म civilians, हम्म and it became displacement हम्म of many people, हम्म and also destruction of infrastructure and many tourist places, हम्म and it also give very bad environmental impact. हम्म Give air pollution, noise pollution, हम्म and it gives social disruption right, and human right abuses right, and cultural and historical impact right, and health care crisis. right, yeah, The war become very critical when in used biological biological equipment. weapons. Hmm. That's all, sir. Okay, so see, and war, no, as it sounds like, okay, somebody is fighting today and no things will be all fine tomorrow. It doesn't happen that way. When we fight with our friends, it is like, a 10-minute fight and then everything settles down. Imagine what happened during World War II to, Hiroshima and Nagasaki, right? It leaves long lasting impact on the society, on the human lives. Even people say that the kids who are born in Hiroshima and Nagasaki, not everybody is always as healthy and fine as any other place. So the radiation, the pollution that that these wars bring, that that impacts human life in many ways, which is hard to recover actually. So I would want you guys to keep on touching upon those aspects also. So everybody is giving a lot of inputs, a lot of thoughts, but I want to hear more actually. Very well done, नैतिक बहुत बढ़िया बेटा अच्छा देखते हैं यहाँ पे रुद्रा ने भी हाथ खड़ा किया और क्रिस ने भी हाथ खड़ा किया let Chris finish first so one window is Okay. completely taken care. Yes, sir. Hmm. Yeah. My when there is bomb blasted in wars, the smokes appear, harmful gases appear that affect people's lives, Mhm. and when areas near borders have destroyed because of the wars, and many those things those have increased due to some due to war bar like bread, biscuits, etc. And Mhm. many and there is electricity shortage in many Mhm. areas due to wars. War if affects people's lives, homes, and marriage, and many children have have lost their families when they are very small in age. Yeah. There is bomb blast, missiles in all the areas. Some areas is fully destroyed because of the war. So we don't have to do war. We have to live lovely with each other. If we have any issue, we have to solve it like how Mahatma Gandhi solved. Very nice बेटा बहुत बढ़िया So here, Chris has gone one level further, saying that no war. These are the side effects of war, and it affects human life in many ways. And he's actually giving a solution also that like the way Mahatma Gandhi, you know,
was always, preaching for peace, to value human life more than war. We should follow that. So very well said, Chris. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए रुद्रा के पास जाते हैं. Then we'll go to Shivani. Hello, sir. Yeah, बेटा. The war has adversely affected the life of human beings. The time when the war get over is more worse than the time during the war was broke. After the war, Yeah. there is nothing left. Everything is destroyed, from the building mentioned to the mental life, social life of the people, especially of the soldier. And war and armed conflict causes a significant loss to human life and is a major cause of disabilities worldwide. Mm. In addition to those hurt and killed as a direct result of violent conflict, a vast amount of people are also negatively impacted by the wider effect of war on global health. That's all, sir. Mm. Thanks. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. So आपने बहुत कुछ कवर किया रुद्रा. You you kind of gave a structure to what you said. So instead of going in one direction, you covered the social impact, the economical impact, the people impact. So very well said. Let's see what Shivani has to say. Good morning, sir. Good evening, Vita. Sir, war has a devastating impact on people's Lives. lives. Hmm. The effects of war include first injury and death, Hmm. and destruction of land and property, Mm-hmm. displacement of citizens, long-term physical and physiological damage to children and adults, क्या बात है. decrease in property and population. Hmm. And the effects of war are no way better in affecting human life. Hmm. Yep. There are numerous effects, including loss of happiness, of your loved ones, of shelter, Hmm. inflation, and economic recession, which influence people's lives very badly. Hmm. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा आपका. I could hear that uh, structure in the way you wanted to, share it, and it's like, you gave a very concise view of what you heard from everybody and how you look at it. तो बहुत बढ़िया बेटा. तो बहुत बढ़िया था. इसमें दो वर्ड का हमको लगा कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉलिश कर दीजिएगा. एक था इन्फ्लुएंस और दूसरा था इन्फ्लुएंस, और क्या था एक, भूल गया मैं. ठीक है. तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद आएगा. उसमें भी दो वर्ड था एक्चुअली. एक था इन्फ्लुएंस और Lives. हाँ. Leaves. हाँ, लाइव्स तो आपने ठीक करेक्ट कर दिया One था. दूसरी बार lives. बोल के. हाँ हाँ. लाइव्स तो आपने करेक्ट कर दिया था. एक और दूसरा वर्ड था. ठीक है. देख लेंगे इसको बाद में. हम भी देखेंगे वीडियो तो बता देंगे. ठीक है. बट हमको बहुत मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि आई सी लॉट ऑफ थॉटफुल शेयरिंग ऑफ द आइडियाज. ठीक है. पक्का होने की जरूरत नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट हो जाए. आप लोग का उम्र ही क्या हो. आप लोग तो 9-10 का बच्चा हो. ठीक है. लेकिन द मेच्योरिटी दैट आई एम सीइंग फ्रॉम यू गाइस, it's awesome. I mean, even क्रिस जो कि बहुत छोटा बच्चा है. आप लोग कंपेरिजन में और भी छोटा है. वो भी he is also thinking of, war is a very bad thing, and then he's giving a solution also. कि भाई you have to look at kind of non-violence as a solution for this problem, which is very much needed. I mean, I'm pretty sure the whole world is missing Mahatma Gandhi right now. Right? We certainly need somebody like Mahatma Gandhi or Nelson Mandela who can kind of tell the whole world that, boss, stop.
enough, right? So very well done बेटा, अब आप लोग बहुत ही अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, आई एम लाइकिंग इट. चलिए देखते हैं who is wanting to go next. And again, I don't want you guys to restrict your thought process just because there could be some limitation with the language that we are learning, right? अगर ऐसा कुछ है जो बोलना चाहते हैं, if you have to say that in Hindi, say it in Hindi. I'll translate that for you. But don't restrict your, don't stop your thought process. ठीक है? अगर जो लोग भी नहीं बोले हैं, आई वुड वांट यू गाइस टू नो जस्ट गेट गोइंग. हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी बोलिए, एंड आई विल हेल्प यू ट्रांसलेट दैट. ठीक है? बाय द वे रुद्र, इंडिया का बैटिंग शुरू हो गया, 4 बॉल पे 4 रन. चलिए लेट्स स्टार्ट. जी देखिए नाविया भी आ गई हैं. लेट्स सी who has something else to share about the impact of war on human lives. चलिए उज्जवल बोलिए बेटा. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. The effects of war is clear along the physical and physical colleagues harm to children and adults, हम्म. as well as reduction and material and human capital. फिर से लास्ट वर्ड क्या था? एज वेल एज Material and human capital. अच्छा, material human capital, तो that part I understood. There was one word in between जो भी that I could not hear. ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, अगर कुछ मिलेगा तो बताइए. Death as a result of war is रिजल्ट ऑफ. simply the tip and the iceberg. तो इसको बोलते हैं, देखिए ये है एक, ये फ्रेज है जो आप लोग यूज करेंगे, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब समथिंग दैट इज सीन वेरी लिटिल. बोलते हैं ना कि the amount of development that people know about for India, that is just tip of the iceberg. मतलब आपने सिर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा जाना है उसके बारे में. So Yes, tip of the iceberg is a phrase that is used to say that we have just learned a very little about a much bigger thing. ठीक है? चलिए बोलिए. yes, that's also. Thank you. ओके. तो उज्जवल को हम इतना बोल दें कि उज्जवल बीच में रुके हैं, लेकिन see that is what, see, my purpose is twofold. One is to make you guys speak, and second is make you guys speak right? So that is why if I'm interrupting you, it is not to prove you wrong, it is to enhance your skills. ठीक है? कहीं पे भी अगर मैं रोकता हूँ तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा. ठीक है? Nice, sir. Nice, sir. हाँ. चलिए भाई, थैंक यू उज्जवल, आपने भी अच्छा स्टार्ट किया, और इंटरेस्टिंगली आपने एक एक नया फ्रेज सबको सिखाया. यू मेड मी आल्सो प्रैक्टिस, दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग. आइसबर्ग मतलब बर्फ का सिल्ली जो होता है ना, जो बोलते हैं आइसबर्ग, जो बड़ा बड़ा बर्फ जमा होता है उसको. सो टिप ऑफ द आइसबर्ग इज ऑलवेज लाइक समथिंग दैट यू नो वेरी लिटिल अबाउट, एंड इट हैज मच मोर हिडन टू इट. ठीक है? Yes, sir. चलिए देखिए भाई, हु इज गोइंग नेक्स्ट. नाव्या है, आंचल है, इधर सत्यम भी है, सत्यभजन, सत्यम पटेल. जैसे मैंने सत्यम का नाम लिया, सत्यम निकल लिए. ओके, आंचल भी चले गए. ओके, चलिए तो नाव्या है या नहीं? हाँ नाव्या है ना. तो नाव्या चलिए भाई, आपका आपका पॉइंट शेयर कीजिए, आपका इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर कीजिए अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन लाइफ्स, इफ यू हैव थॉट. नहीं तो थोड़ा टाइम लेके बोलेंगे तो दैट इज आल्सो ओके. सबको जल्दी जल्दी बोल लेंगे तो हम लोग को क्रिकेट देखने मिलेगा फिर. नाव्या और आंचल दो लोग हैं जिनसे हम सुनना चाहेंगे. अंकित ने भी नहीं बोला अभी शायद. ओके, सत्यम. ओके, अंकित बोलना चाहते हैं. अंकित बोलिए भाई.
human life is boiled down to impact on mental health, Hmm. the division of people, the displacement of people, and finally of changing of morals. Hmm. Be it is resolved that war does impact human life, Hmm. can cause long-term problems such as PTSD, depression, culture shock, and wars. Thank you, sir. Hmm. देख बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने कुछ पॉइंट टच किया। दो तीन बार लोगों ने बोला कि इट ब्रिंग्स इम्पैक्ट टू द मॉरल ऑफ द ह्यूमन आल्सो, एंड दैट इज ट्रू। देखें क्या होता है ना, जैसे कि अभी अभी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि भाई ठीक है मेरे घर में इतना खाना बना है, सब में बराबर बराबर बांट दिया गया, और जो है अगर कुछ बच गया तो कोई बाहर कोई गरीब है उसको भी दे दिया। लेकिन when the war happens, you will see that people lose their those values. They will they would want to save everything. They would want to save everything for themselves. Even there are situations where people don't feed their family itself. कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगी तो मेरा मैं फैमिली का देखभाल कर सकती हूँ, मैं तो खुद का जान बचने गारंटी नहीं है, फैमिली क्या बाहर में। मतलब आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड स्टेटमेंट, बट that is what happens when people get very desperate. They don't even think about what is right or what is wrong. People start stealing food from stores, from everybody else's house, you know, to survive, which is morally not right. So that is what is meant by impact on moral lives, moral values actually. So I think you guys are touching all the aspects. I'm just kind of rephrasing or adding more meat to it. तो आप लोगों को सिखाने के लिए चीज बोल रहा हूँ। देखिए, एडिंग मीट टू समथिंग मतलब एडिंग मोर कंटेंट बोलते हैं ना। यू हैव टोल्ड एवरीथिंग, आई एम जस्ट एडिंग मोर लिटिल मोर मीट टू इट। एडिंग मीट टू इट मतलब इसे होता है ना, प्रोटीन किस लिए खाते हैं कि भाई बॉडी बनेगा, मसल बनेगा, है ना। तो एडिंग मोर मीट मतलब एडिंग मोर प्रोटीन, एडिंग मोर मसल टू व्हाट यू आर व्हाट यू आर शेयरिंग एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए उसको बोलचाल के टर्म में लोग बोलते हैं कि uh, this lecture is very very light, add some more meat to it। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे पूजा पूजा बोल रहा हूँ आज, यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन लाइफ। मतलब जो लड़ाई झगड़ा, जो मारपीट चल रहा है अभी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, या रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके वजह से ह्यूमन लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे बच्चों की का फ्यूचर खराब होता है, लोगों की जिंदगी जाती है, लोगों का नौकरी चला जाता है, पीपल आर मेड टू लीव देयर हाउसेस। लोग यूक्रेन में बहुत सारे लोग छोड़ करके अपना, नहीं था खतरा है जान को, तो अपना फैमिली लेकर के जो भी है नहीं है उसको लेकर के यूरोप के बॉर्डर पे चले गए हैं। मतलब बहुत से लोग जर्मनी भाग गए हैं, या मतलब जहाँ पे जो उनका देश नहीं है, दे विल प्रोबब्ली लीव अ वेरी लीड अ वेरी बैड लाइफ देयर, बट दे स्टिल नॉट जस्ट ट्राइंग टू सेव देयर लाइफ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि वॉर जो होता है उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है, हाउ डू वी परसीव इट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट बाय सीइंग इट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो वही शेयर करना है आंचल। थोड़ा और सोचिए, सबका सुनिएगा तो आपको भी आइडिया आएगा। चलिए नाव्या बोलिए बेटा। नाव्या बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today, topic on effect of war in our life. हाँ। The effect of war are widely spread and can be long term or short term. हाँ। Present day, interval war generally take a large toll on civilians that state wars. This is due to the increasing trend where combat combatant have made targeting civil a stating object. हाँ। Effect of war also include mass destruction of cities and have long lasting effect on a country economy. बिल्कुल।
These indirect consequences are often overlooked and unappreciated. Hmm. Mhm. A state conflict is an armed conflict that occur with the use of armed force between two parties, of which one is the government of the state. Hmm. The widespread trauma caused by these atrocities and That- suffering of the civilian population is another legacy of this conflict. Hmm. The, the following creation extensive emotional and physical strain. Hmm. Soldiers experience were differently than civilians. Hmm. Although both suffer in time of war, women and children suffer atrocities in particularly. Hmm. In the past decade, up to 2 millions of those killed in armed conflict were children. Hmm. That's all. Thank you, sir. Okay. तो पहले तो आप आपने एट्रोसिटी दो बार यूज किया. आई वांट यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी. एट्रोसिटी जो आपने वर्ड यूज किया, that's a good word. I want everybody to learn that. तो हम्म. It means, sir, अत्याचार इसका हाँ, आपने सही वर्ड पकड़ा है. तो अत्याचार. तो हाँ, जैसे एक्सट्रीम क्या बोलते हैं इसको, आप गूगल में ढूंढेंगे ना तो बोलेगा एक्सट्रीम क्रूअल और इनह्यूमन बिहेवियर और वीकेड बिहेवियर. ठीक है. तो ये मतलब अगेन नाविया आपने मतलब काफी सारा अगेन रिलेटिंग इट बैक टू द वर्ड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट. You added a lot of meat to this discussion. आपने बहुत सारा पॉइंट डाला. Again, those are related to. I mean, that sounded very, what you call, very much. Um, क्या बोलें उसको उसको बोलेंगे, very much vocabulary intensive words or ideas, right? आपने कहा, instead of saying war, you said that armed conflict, right? Armed conflict is a terminology that we don't use normally, right? मतलब समझिए, लड़ाई हुआ या वॉर हुआ, लेकिन आर्म से ही लड़ाई होता है, राइट. वेपन्स यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे यू इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म सेइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, विच आई लाइक. तो यहाँ पे देखिए ना, अल्टीमेटली all of us are relaying the same message, saying that war has impact on human life, impact on their moral and mental state of uh, moral and mental health, state of the health. And then it brings long lasting impact to the society, to the economy, to the physical and psychological state of people. There's other thing that Navya brought in. She started talking about war brings short term and long term impact on all aspects of life and human beings. So again, long term will be those things which takes much longer to recover. Short term will be the thing that is, let's say war happens, people leave their place, go to the nearby city and stay there till things settle down. After war is done, they come back and no, start living in the same place. No damage done. So those are like short-term impact where people have to dislocate and go to some other place only for a short while, and then it recovered. So always when we talk about war, there's short-term and long-term impact. Some people are lucky or blessed to have a short-term impact. There are families and people and societies which have much longer-term impact. Look at what happened to Syria.
Syria used to be one of the, I would say, good place to live. People used to have, very good life actually. Syria again in the Middle East, right? They have a lot of, they had a lot of, oil refineries, or oil reserves actually. Now it's like, a barren land. There's nothing for people to kind of uh, plan their life for. Right? So basically, war has a huge impact on human lives, short term, long term, and then obviously, as we heard from Chris, somebody has to advocate that non-violence and its impact, and kind of bring everything to rest actually. Otherwise, this is not a good state. बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आंचल और सत्यम, सत्यम एजन सत्यम पटेल, दो लोगों ने नहीं बोला है. अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तो आई वुड वांट टू हियर, और आई वांट टू हियर बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हैव फियर. दैट्स द थिंग. डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, गलती होगा होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो बोलिए भाई, बोलना तो पड़ेगा सबको. हम्म. रू- Good evening, sir. जुड़ने बेटा. War completely devastates the human's life. हम्म. War is not the solution to any problems. हम्म. It increases the rate of poverty. It gives birth to number of diseases. हम्म. It disturbs the humans mentally, हम्म. and the economic position of the country decreases. हम्म. The effects of war include long-term physical and psychological harm to हम्म. children and हम्म. adults also, हम्म. as well as reduction in materials and human capital. बहुत बढ़िया. That's all, sir. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. देखिए, बोलते हैं डर के आगे जीत है. जो लोग बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे. So and that's a trick that works for any and every communication skill, any language for that matter. तो मतलब आप लोग सबने बहुत सारा इंसाइट शेयर किया, बहुत चीजें बताई, और दोज आर ऑल रिलेटेबल. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो विच केम आउट ऑफ द वर्ल्ड, anything that we don't know about. It's about knowing about things and then putting it together in a structured way, जो आप लोगों से बहुत लोगों ने किया. So thank you so much for that. Achal, you want to give it a try? दो लाइन ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं. नाविया अपने हाथ खड़ा किया हुआ है अभी. और कुछ कोई है साथ में शेयर करने के लिए कुछ, या नहीं तो आप हाथ नीचे कर सकते हैं. जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई हैव कवर्ड एवरीबॉडी. ओके, तो चलिए फिर. आंचल लगता है कि आज नहीं सुनाएंगे. तो आंचल, आप व्हाट आई वुड सजेस्ट इज just prepare few lines. I know I did not give you guys enough time, so I take blame for that. I should have ideally given this topic a little early in the morning for you guys, but मैंने थोड़ा लेट से दिया, तो उसके लिए सॉरी. अभी इतना ही करेंगे कि जो लोग भी नहीं बोल पाए हैं या बोलने का मौका नहीं मिला, आई वुड सजेस्ट कि आप 2 लाइन 4 लाइन प्रिपेयर कीजिए. समझिए कि आपको इस पे एक ऐसे लिखने के लिए आया है, और उस पर 5 लाइन लिख करके किसी को नोट कर लीजिए, और इसको आप जो है व्हाट्सएप में भेज भी दीजिए मुझे, ठीक है? क्योंकि नहीं करेंगे ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं. और
करने पे ही मजा भी आएगा, एक्चुअली बात वही है ना। तो बस आज यहीं पे ब्रेक करते हैं हम लोग। अभी रुद्रा का स्कोर हो गया है 4.6 ओवर में 32 रन। रोहित शर्मा मस्त बैटिंग कर रहा है, 2 छक्के लगा चुका है। तो भाई यही है, आप लोग जाइए क्रिकेट मैच एंजॉय कीजिए, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। Bye.